Namaskar बच्चों, this is your RJ sir. Today we are going to discuss balancing equation ion electronic method in basic medium. नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन लास्ट टाइम अब जो एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग करे थे, आज अपन बेसिक मीडियम का पार्ट 2 बैलेंस करेंगे। यू नो दैट लास्ट वी completed acidic medium balancing equation, some rules and regulations. So we can continue today further balancing. आप एक बार सुनिए, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आने के लिए पिछले वीडियो एक बार देखिए, आपको रूल्स भी समझ में आ जाएंगे। दिस इज पार्ट 2। वी नीड टू डिस्कस टुडे व्हाट आर द बैलेंसिंग इक्वेशंस ऑफ ion electron method by basic medium. Which medium? Basic medium. So just now I inform you that. So don't forget to watch here. Please watch for rules of balancing equation last video for continuation of this video. Don't forget to watch. Clear? Now, अब देखिए बैलेंसिंग मीडियम में एक बार अपन रिकैप करेंगे। बैलेंसिंग इक्वेशन ऑफ बेसिक मीडियम में अपन को क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिए। बेसिक मीडियम में अपन क्या इंपॉर्टेंट करे थे लास्ट वीक में। बेसिक मीडियम में एज इट इज एसिडिक मीडियम, बट हियर for oxygen atoms we need to add here OH minus ions, and whereas for hydrogen atoms we need to add here water molecule. मालूम हो गया ना हमको। सो ये ऑलरेडी ये रूल्स हम लोग को इससे पहले भी समझाया था। दिस इज द डिफरेंस, रिमेनिंग इज एज इट इज, बट ओनली डिफरेंस इज ऑक्सीजन एटम के लिए OH माइनस ऐड करते हैं, हाइड्रोजन के लिए वाटर मॉलिक्यूल एज के लिए। रिमेनिंग एज इट इज डोंट फॉरगेट। ओके, we'll see with best example. We'll see one best example. Now all of you concentrate here. We'll see with the one best example. Yeah, this is a basic medium equation. P4, concentrate all of you. Yeah, P4 gives rise P4 gives rise PH3 PH3 plus H2PO2 minus. This is basic medium equation. This is basic medium equation. OH minus is given. So in this equation, we need to separate both. What are the both here? You can see all of you. Here, this is one type and another one is another type. ये देखो, ये फर्स्ट वन एक टुकड़ा है और बाकी का सेकंड वन में और एक टुकड़ा। ये दोनों को अपन अलग करेंगे। कैसा अलग करेंगे? बेस्ड ऑन ऑफ सेल रिडक्शन रिएक्शन, ऑफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये बेस करके अपन व्हाट इज ऑफ सेल ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑफ सेल रिडक्शन, अभी देखिए। देखिए तो यहाँ पर अपन को P4 है, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ से इधर आ गए तो ये देखो, यहाँ से इधर आए तो क्या हुआ, यहाँ पर खाली हाइड्रोजन ऐड करे सो है। वी नो दैट व्हाट वी डिस्कस प्रीवियसली। अगर अपन हाइड्रोजन ऐड करें तो वो क्या है, reduction है, isn't it? So once it is reduction, this is here reduction reaction. If it is a reduction reaction, we know this one is reduction reaction, other one automatically oxidation reaction, because totally we call it reduction reaction. So that's it. Simply we can find which is reaction, which is oxidation. Therefore ये देखिए अब ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, वही हिसाब से मैं दो इक्वेशन को अलग कर रहा हूँ। P4 gives rise PH3 and one more equation P4 gives rise H2PO2 minus. Like this I made two equations. ऐसा मैं दो इक्वेशन को अलग कर दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, वहां पर फर्स्ट एटम्स को बैलेंस करना चाहिए। एटम्स क्या है देखिए, देखो चार फास्फोरस है यहाँ पर एक ही है, इसीलिए अपन मैं क्या कर रहा हूँ, चार फास्फोरस लगा दे रहा हूँ। एटम्स बैलेंस करना है फर्स्ट। यहाँ पर देखिए चार फास्फोरस है, ये देखो चार फास्फोरस है, यहाँ पर एक ही है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं
चार फास्फोरस यहाँ पर भी ऐड कर दिया। तो ऐसे एटम्स अपन बैलेंस कर रही है। तो एटम्स बैलेंस होने के बाद अपन क्या करते हैं? एटम्स बैलेंस होने के बाद अपन क्या करते हैं? आपको ऑलरेडी समझाया मैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। What is hit and trial method? Very, very important. We'll discuss about this method before going to remaining balancing. Okay, student? So we'll discuss here this one before going to remaining balancing. All of you see this. I'm taking here a part to explain what is hit and trial method. All of you concentrate student here. This is very, very important. This is very, very important. What is hit and trial method? What is hit and trial method? See, I'm taking here, see, balancing I'm taking. Two balancings are there. So this is here balancing, right? I am picking this balancing. Addition of some vegetables, or you can take any items. Vegetables are any items you can add. For example, here we are adding some weights. 1 kg weight. 1 kg weight is added here. 1 kg weight is added. How much weight is added? 1 kg weight. Now I am adding here some vegetables. I am adding here. See, both are same or different. We can check it out. We can lift balancing. After lifting the balancing, for example, these are less. This weight is less. You can assume that ये है ये वाला कम है अपन ये वाला कम है समझो फॉर एग्जाम्पल ये वाला कम है तो अपन क्या करते हैं और थोड़ा डालते हैं और थोड़ा और थोड़ा ये बैलेंसिंग में आपको मेरे को ये राइट हैंड साइड होता आपको लेफ्ट हैंड साइड होता सो ये साइड अपन क्या करता और थोड़ा आइटम्स डाल दे जब क्या होता फिर ये थोड़ा कम हो गया इसमें फॉर एग्जाम्पल ये ज्यादा होता है कि ये क्या होगा ये कम हो गया फिर क्या करते हैं इसमें थोड़ा निकाल देते हैं थोड़ा क्या करते हैं अपन निकाल देते हैं सो वाट एवर वी कैन डू वी नीड टू बैलेंस दिस वन by addition of isn't it vegetables or any other items that is we can add something and lift up trial this is trial you can add something and trial add something trial add something trial so at last we want balance you can do anything you can do anything that is your balancing equation so we can add anything means what here in order to balance this equation we have only two things one is here we have one is here OH minus ions we need to balance in this equation OH minus ions. And second one is we have here H2O molecules. H2O molecules. So two things are available to balance this equation. How many things are there? Only two things are there. One is water molecule, another is what? OH minus ions. So due to this, we need to add which is best. Yes, according to my knowledge, water molecule is best because water molecule do not contain any charge, but OH minus contain minus charge. If you are going to use OH minus to balance in a hit time trial, what happen, charges also increases. So in further balancing, charger will be more. That will give some difficulty to charging, or we can balance this equation. Therefore, I am selecting here. I am selecting here mostly water molecules are I am going to select instead of OH minus ions. Instead of OH minus ions. Clear, sir? Now we can see. So that is called it and trial method. It and trial method. Now by using this method, what I am doing, all of you concentrate. This is very, very important. See, after addition of after balancing of atoms, I am going to balance here what? Remaining. What is remaining here? Here we have oxygens. Oxygens are there or not? No. No oxygens are here and there. So leave it. Now here, yes, here 4 to the 8. 8 oxygens are there. So in order to hit and trial method, how many oxygens are there? 8 oxygens. So 8 oxygens, this side we are adding. That's it. 8 H2O molecules. That is, I am selecting water molecule to balance oxygen atoms in ethynyl method instead of OH minus. Don't forget this. Instead of OH minus. Clear? So 8 water molecule, therefore oxygens are balanced. Now there is no oxygen atoms in this equation, therefore no balancing. No balancing.
Next step we'll go for here. Next step, all of you concentrate here. Next step here, what I am doing. Next step, all of you concentrate. What I am doing next step, all of you see this. Next step, we need to balance according to it and trial method is completed. It and trial method is completed. Just I balanced here water molecules of oxygen, but here no oxygens. Therefore, it and trial is over. Now we need to follow our basic medium rules. What are basic medium rules? Here, basic medium rules, we can check it out again. Here, for oxygen atoms, we are adding OH minus. For hydrogen atoms, we need to add what? Water molecule. So now, just now we completed ethyl method, ethyl trial method. Oxygen atoms are balanced by the water molecule. Yes, this is completed. Now remaining is hydrogens are there. How many hydrogens? See, 4, 3, and 12 hydrogens are there. So in a basic medium, for balancing of hydrogen, what we are taking? Water molecules we are taking. Same. Here also come to this point. See, for balancing of hydrogen atoms, 4, 3, and 12. Through 12 water molecules we are adding. See, for hydrogens in balancing equation of basic medium, we are adding water molecule. Yes. So whenever we are adding 12 water molecules this side, opposite side, we need to add 12 OH minus ions. This is very, very important, students. How many water molecules we are adding? Opposite 12 OH minus should be added. That's it. Everything, hydrogens and oxygens and everything is balanced. Come here. See, how many hydrogens are there? Just now we added 4, 8 H2O. So 8 to ja 16. Here already hydrogens 4 to ja 8. Here 8, here 8, here 16. So you can see where less number of hydrogens are there, here less number. So what is the comparison? Here 8, here 16. So here 8 or more, that is compared to H2PO2 minus. Therefore, we can add here 8 water molecules. 8 water molecule this side. 8 water molecule this side. See, 8 water molecule this side. Opposite side, just now what I said, 8 OH minus we need to add. This is a simple logic. Simple logic. Whenever we are going to discuss this one, this step, so all of you be concentrate. Be concentrate. That is very, very important and interesting point of view. See what is this? What I am doing here? I will explain again in another window what I am doing here. See, for balancing of for balancing of for balancing of here hydrogens. Whenever I am going to balance hydrogen atoms, what I am doing you see. Whenever we are going to balance hydrogen atoms, what happen? Whenever we are going to balance hydrogen atoms, what happen? Hydrogen for hydrogen atom we need to add water molecule. That is common. Whenever we are adding water molecule for hydrogen atoms, water molecule for hydrogen atom. Opposite side, how many water molecules we are adding? One. Therefore, one OH should be OH minus should be added. Opposite side, one OH should be added. For example, you can add here two water molecule. For example, we are adding two water molecule. How many water molecule? Two water molecule. Then what you have to do now? Two water molecule means opposite side, two OH minus you need to add. This is simple logic to balance both equations, both side equation. See how many water molecules we are adding because here 16, here 8. So here 16 means 8 minus 16, 8 are there. Opposite I am adding how much? 8 water molecule. So this side, another side we need to add what? 8 OH minus. So previously whatever ethyl method we can add water molecule as it is. So now you can remove this water molecule after balancing of this. See here 8 water molecule, here 8 water molecule will be removed. Okay, so both 8 water molecule will be removed. Due to that what happen? So water molecule will be balanced and oxygen is also balanced, hydrogen also balanced. So we are going to see now charges. See this? How many charges we have? See 12 ones are 12. So 12 charges are there, negative charges are there. So 12 negative means opposite we can add here 12 electrons. Opposite we need to add how many electrons? 12 electrons. So I added 12 electrons. This side 8 ones are 8. Here 4 ones are 4. So here 8, here 4. So we need to add here electrons we have. No positives.
Therefore, 4 electrons should be added. How many electrons are added? 4 electrons will be added. So this side we can add 4 electrons. Now next step is we need to go for equalize electron. How many electrons are here? 12 electrons. So here how many electrons? 4 electrons. So we need to multiply with 3 this equation. We need to multiply with 1 this equation. So after multiplying 1 we'll get this equation. See this 1 into P4 same 12 into 12 1 ja 12 and 1 12 electron 1 4 ja 4 12 OH 12 OH and this equation multiply with 3 so you can multiply with 3 we'll get here 3 P4 and 3 8 ja 24 and 12 H2PO4 and 12 electrons. So now we know this electrons will be we need to cancel. See here 12 electron will be cancelled. After cancelling this both sides, you can add all this. See here we have extra molecules are there. See that is here 24 OH minus are there here. Here 12 OH minus are. We can cancel both are opposite sign. This is nothing but this arrow nothing but equal. दिस एरो नथिंग बट इक्वल तो इसीलिए अपन क्या करते हैं ये एरो को वो साइड यहाँ साइड है इसको दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 12 24 है 24 है सो ये दोनों को और यहाँ पर 12 को कैंसिल करो तो 24 12 तो यहाँ पर क्या बचता 12 बचता सो और यहाँ 12 वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज है 12 OH माइनस है और क्या है P4 एक है यहाँ पर भी 3 है तो कितने होता पूरा 4 हो जाता क्लियर सो नेक्स्ट क्या करते हैं अपन यहाँ पर 4P एज इट इज लिख लेते हैं और 12 H2PO4 माइनस एज इट लिखेंगे तो कुछ भी नहीं है और पूरा हो गया तो अब क्या करा मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ से मैं ये पूरों को सिंप्लीफाई कर दिया कौन सा टेबल में जाता है ये 4 सो 4 टेबल में से 4 1 जा 4 4 3 जा 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा ऐसा मैं इक्वेशन को क्या करूँ मैं सिंप्लीफाई कर दिया सिंप्लीफाई कर दो सिंपलेस्ट इक्वेशन आ गए इसमें देखो सिंपलेस्ट इक्वेशन P4 plus 3H2O plus 3OH minus gives rise PS3 plus 3H2PO4 आ गए ना पूरा इक्वेशन अपन को आ गए सो है आगे तो दैट इज योर कंप्लीट इक्वेशन सो ये इक्वेशन अपन को बैलेंस हो गए नहीं ये देखिए पूरा एटम्स बैलेंस है 4 P4 है यहाँ पर भी एक यहाँ पर 3 4 है और वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन देखो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 6 सो 3 2 जा 6 आगे हाइड्रोजन भी बैलेंस है 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 राइट 9 सो यहाँ पर 3 है 3 2 जा 6 9 सो हो गया ना चार्जेस भी बैलेंस है देखो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 यहाँ पर 3 1 जा 3 एवरीथिंग इज बैलेंस सो दिस इज कंप्लीट बैलेंसिंग इक्वेशन अभी क्या करेंगे अपन व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दी learning this balancing equation not this lengthy in objective examination they won't ask all these things but that is base actually we need to know the base right now how to get the balancing equation so with a shortcut method all of you concentrate here very important show all of you concentrate what is the shortcut for the balancing equation all of you see this one all of you see this one yeah concentrate here this is one general equation is given for example one equation is given like this what is this equation all of you check it out mn yeah mn mn O4 minus gives rise mn plus 2 is given that is a question what is the question for this firstly this is the question is how many water molecules are how many water molecules are required for the balancing of above equation that is question what is the question all of you concentrate how many water molecules required for the balancing of above equation ऊपर का जो इक्वेशन दिया है ना वो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए अपन को समझ में आ रहा है तो ऑप्शंस क्या दिया ने ये देखो 4 वाटर मॉलिक्यूल 6 वाटर मॉलिक्यूल 3 वाटर मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल अब देखेंगे कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए ये देखो कितना फास्ट अपन इक्वेशन कर सकते हैं ये देखो ये लिया ना अपन ये ऊपर देता हूँ एसिडिक मीडियम बोल के दिया है तो एसिडिक मीडियम बोल के दिया ना रूल्स अपन मालूम है एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के लिए हाँ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं
हाइड्रोजन के लिए H प्लस आयन ऐड करते हैं, बस इतना याद रखे तो बस है अपन को। तो ये याद है, ये देखो याद है तो शॉर्टकट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट क्या करो, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन है, तो इधर कितना है, कुछ भी नहीं है, तो अपोजिट साइड क्या करना, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो। और हाइड्रोजन अभी ऐड करें ना अपन, 4 2 8, सो 8 H प्लस इधर करो। और उसके बाद क्या करते हैं, चार्जेस करते हैं। चार्जेस देखो 8 1 8 है, यहाँ पर 1 × 2, तो खाली 2 है, तो यहाँ पर कितने हैं, 8। 8 में से 6 निकालो, 2 आता, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो अपन पूरा हो गया इक्वेशन। सो दैट ये देखो पूरा कंप्लीट कर दो, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स gives rise gives rise, tell me, Mn+2 plus 4H2O. Now this is complete equation. Now tell me how many water molecule required for this balancing of this option, this optional reaction? Yes, 4 water molecule. What is your answer? Yeah, this is your answer. Clear? This is simply we can give the answer. And sometimes they are asking here how many H plus ions required. They are asking how many H plus ion required. 8 H plus 1. And one more question, how many electrons also required? You can see electrons also we can balance it simply, right? And one more question here, very important. How many electron exchange in this equation? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज इन द इक्वेशन, नहीं देखो ये करने के लिए अपन क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज, ये करने के लिए अपन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, कैसा करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखिए ध्यान से सब लोग, मैं आपको समझाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा बैलेंस करते हैं, आपको सबको मालूम होगा ना। सो ये क्या है, एम एन 1 मिनट, MnO4 माइनस दिया, so अपन को ये नहीं मालूम ना, x है वो, x, right? And Mn is x. How many oxygens? How many oxygens? 4 oxygens. Oxygen state क्या है, minus is equal to charge. What is the charge? -1. So now we can get it, x minus 4 1 जा 4 8 is equal to -1. So अब क्या होता बेटा, ये इधर ला लो, अब यहाँ माइनस प्लस होता ना, सो x इज इक्वल टू 8 प्लस -1. सो योर आंसर इज, टेल मी, योर आंसर इज x इज इक्वल टू +7। x इज इक्वल टू क्या है, +7। तो इस वजह से अपन बोले ना ये क्या है, ऑक्सीजन शीट क्या है, +7 है, इधर का ऑक्सीजन क्या है, +2 है। डिफरेंस क्या है, बोलो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, सो दैट, सो हियर +7 से लेके +2 तक है, so how many electrons exchange? 5 electrons exchange. This is also called n factor. What is this? N factor. So what is the use of n factor here? What is the use of n factor? So here gram equivalent weight. Gram equivalent weight is equal to gram molecular weight by, that is here n factor. So it is useful to calculate gram equivalent weight. So n factor is useful to calculate what? Gram equivalent weight. So when you know the n factor, you can find here gram equivalent weight of that component acidic medium. Clear, friend? This is. So today I am also giving one question to you. So you can try this question. What is the question? See, Cr2O7 minus 2 H plus acidic medium, and this is also acidic medium I given, acidic medium. And how many H plus ions required for the balancing of this optional reaction, this optional reaction, give your answer. Clear? So that is today's class. Thank you very much, and don't forget to subscribe my channel and follow more videos like this. Okay, thank you very much.